Good morning, kids. How are you all? I hope you all are well. And today we will do the chapter number 11 on the page number 74. Chapter number E for Environment in your Social Studies book, Part 2, Class 5th. So let's start with the chapter. Wait, why so in a hurry? If you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel and turn on the notification bell, as some kids say that they don't get the notification when we post a new video. So please don't forget to subscribe the channel, press the notification bell, like the video and share it as much as you can, and let's go with the chapter. So get it. So we have to circle the things green if we can reuse them, blue if we can reduce their usage, and red if we throw them away. So green, we will circle the things which we can reuse, underline a baby which we can reduce, and we will straight line which we can throw them away. So water we should reduce. We should use the limited amount of water, not in excess. Clothes, we can reuse them. And orange peels, we often throw them away. And additives, we can use it again. It's just like a gift paper. And polythene, we should reduce. And shoes, we can use them again as by doing some craft work on them by hot glue guns or spraying paint in them. Let's start. Our environment nourishes our life on this planet. The natural balance of our environment is getting disturbed because of pollution, deforestation, population pressure, and other factors. It is very important to re-establish this delicate balance. We should not pollute and damage our environment through our activities. We should do the best to conserve, protect, and nurture the environment. This will save our planet and make it a friendlier place to live in. So this paragraph is explaining that जो हमारा environment होता है वो nourish करता है हमारी life इस planet पर. जो natural balance है environment का वो बिगड़ता जा रहा है. It's getting disturbed because of pollution. बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है. Deforestation, हम trees cut करते जा रहे हैं large number पे. We should not do that. And population pressure. You know, India is on the second number in population. So population का भी pressure है, trees भी कट रहे हैं, pollution भी हो रहा है, और बहुत सारे other factors की वजह से हमारा जो environment है वो disturb हो रहा है. Environment का balance है वो ऊपर नीचे हो रहा है. So we should not do that. So we should keep this balance maintained like a straight hill slope, like a straight plane. Okay, so it is very important. It's very, very, very much important to re-establish this delicate balance. Or if this delicate balance becomes like this, and too much of less natural and too much of pollution, then it will be very difficult for us to survive. So we should re-establish this delicate balance. So we should not pollute and damage our environment through activities. We should do the best to protect, conserve the nature. Because what we do is, when sometimes we do brush and we keep the tap running on, too less amount of clean water is present on the earth this time, literally. So we should turn off the taps while we are rubbing the soap on the face, brushing, or we are rubbing the soap on our body while bathing. And we should try to take a bath with a bucket and mug, not under a shower. And
we should and by doing these steps, by doing something to protect and conserve an environment, will make a planet safe and make it a friendlier place to live in. So our next topic in this chapter is types of waste. All of us generate huge amounts of waste every day. There are two types of waste: biodegradable and non-biodegradable. Leftover food, fruits and vegetable peels, paper and leaves are all biodegradable waste. Biodegradable waste materials rot easily and mix with the soil. Microorganisms such as bacteria, fungi, and earthworms decompose such waste. Plastic goods, silver foil, aluminium cans, and e-waste are non-biodegradable waste. E-waste or electronic waste consists of parts of computers, mobile phones, and other electrical devices. They take many years to decompose. Non-biodegradable waste materials do not rot easily. They do not mix with the soil and remain in the environment for a long time. So this types of waste topic is explaining that we all generate a huge amount of waste every day. Like sometimes like every day, almost every day, we go to market, we buy something with the polythene bags and we throw the polythene bags away. Polythene bags does not decompose. They do not decompose. They remain in the environment for several years. Not for several years, they remain in the environment for centuries. And they make like a कूड़ेदान होता है ना, like you can see this place is so smelly and stinky, and we should not use polythene bags. We should use paper bags, jute bags, and we should use biodegradable waste. We should not waste materials which can cause non-biodegradable waste. लिटरली दिस हमारे 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं. आप सोचो कि यार कचरे के भी 2 टाइप होने लग गए. लिटरली हाँ, होते हैं कचरे के भी 2 टाइप. जो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, लाइक मम्मा खाना बना रही है, हम कहते हैं मम्मा 2 रोटी ले लेंगे, बट हमारी एपेटाइट 1 चपाती की होती है. हम 1 चपाती खाकर 1 चपाती छोड़ते थे, तो मम्मा कहती खाओ खाओ. मम्मा थोड़ी देर फोर्स करने के बाद कहते थे ओके नो प्रॉब्लम्स, लीव इट. उसके बाद वी लीव एनी वेजिटेबल, and this is biodegradable waste. Fruits and vegetable peels, जो छिलके होते हैं, like orange के peels होते हैं, vegetable peels of several vegetables like potatoes etc. वो पेपर और लीव्स, ये सब biodegradable waste होते हैं. और biodegradable waste आसानी से सड़ जाते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवर्म डिकम्पोज करते हैं इन वेस्ट को, जबकि जो प्लास्टिक वेस्ट, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम कैंस और ई वेस्ट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. आप सोचोगे ई वेस्ट क्या होते हैं? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जो कि कंप्यूटर के पार्ट के होते हैं, मोबाइल के पार्ट के होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पार्ट के होते हैं, और ये बहुत टाइम लेते हैं, सैकड़ों साल लेते हैं ये डिकम्पोज होने में. इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जल्दी से नहीं सड़ते, वो जल्दी से आसानी से मिक्स नहीं होते सॉइल में, और वो इन्वायरमेंट में ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक. सो किचन वेस्ट टेक्स 2 to 5 weeks to decompose. Plywoods take 1 to 3 years to decompose. That is also a long time. Paper wastes take 2 to 6 weeks to decompose. This was the waste decomposing in less than 10 years, less than 5 years. Now we will see the waste which will shock us completely. Aluminium cans. It takes 80 to 200 years to decompose, literally. Plastic bottles take 450 years to decompose. Then glass bottles take 1 million years to decompose. Literally guys, this is amazing.
just shocked me that literally we should not use aluminum cans, plastic bottles, and glass bottles. So now we will do a new topic in this chapter only, which is waste management. The practice of collecting, treating, and disposing waste in order to protect the environment is called waste management. In towns and cities, many local agencies look after the collection and disposal of waste. They use many methods to dispose waste. Let us learn about some of them. Landfill is the oldest method of waste disposal. So, what is this waste management topic telling? This is telling that जो practice होती है collect करने की, treating की और disposing करने की waste को order में, ताकि हम अपने environment को protect कर सकें, उसे waste management बोलते हैं. शहरों में, गाँव में और कई सारे local agencies look करती हैं इन collections और disposal of waste पर. ये कई मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो वेस्ट को डिस्पोज करें. और चलो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कुछ के बारे में. और लैंडफिल सबसे पुराना मेथड है वेस्ट डिस्पोज करने का. Landfills are an important and a popular method of waste disposal. Landfills are found in the outskirts of a city. This method, deep ditches are dug and waste is dumped in them. When the ditches are filled, they covered with the soil. In some places, parks and gardens are built over them. तो लैंडफिल क्या होते हैं? लैंडफिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत पॉपुलर मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का. लैंडफिल्स आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में पाए जाते हैं. रिमेंबर दिस वर्ड्स आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, ये हमने उसमें भी पढ़ा था डेमन एंड पीथियस के चैप्टर में इंग्लिश. तो ये जो मेथड होता है डीप डिचेस और डग करने का वेस्ट को, वो डाल दिया जब वो डिचेस फुल हो जाते हैं, वो भर जाते हैं, उसके ऊपर सॉइल कवर कर देते हैं और कुछ जगह तो उसके ऊपर पार्क्स और गार्डन्स भी बना देते हैं. वाओ, इट्स लिटरली अमेजिंग. ओपन डंपिंग. Waste is first loaded in trucks. It is then taken far away from the town or city and dumped in the open. Disposing waste in open pollutes the environment. तो ओपन डंपिंग क्या होती है? वेस्ट पहले एक ट्रक में लोड करा जाता है, फिर वो दूर लेकर जाते हैं टाउन या सिटी से, फिर वो ओपन में डंप कर देते हैं. डिस्पोजिंग ओपन में करना पल्यूट करता है एनवायरनमेंट को. रिमेंबर कूड़े की गाड़ी, कई बार घर में शोर भी मचता है कि जाओ कोई कूड़ा ले आओ, कूड़े की गाड़ी आ गई. क्योंकि हम क्या करते हैं 1 या 2 वीक्स तक कूड़ा एक बहुत जो गार्बेज होता है वो किसी चीज़ में लाइक समथिंग लाइक बोरी में स्टोर करते हैं. एंड जब वो कूड़े की गाड़ी आ जाती है हम उसमें वो वेस्ट दे देते हैं. बर्निंग. In this method solid waste is collected at one place and then burned at high temperatures. Chemicals and other poisonous wastes are burned in large furnaces or insect cells. This method is harmful and causes air pollution. तो बता रहे हैं कि जो बर्निंग का मेथड होता है, ये मेथड सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करता है एक जगह, फिर वो जला देते हैं हाई टेम्परेचर्स पे. ये वेस्ट इंसिक्रेशन है, इंसिक्रेशन प्लांट, ये ऑस्ट्रेलिया में है. उसको हाई टेम्परेचर्स पे जला देते हैं और जो केमिकल्स और पॉइजनस वेस्ट होते हैं उनको जला देते हैं. होते क्या, वो एक इनक्लोज प्लेस होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करी जाती है जहाँ. बट ये मेथड बहुत हार्मफुल है और ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है. कंपोस्टिंग. इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन एंड गार्डन्स is put in pits or bins. This turns into a compost, a nutrient-rich food for the plants. Compost is used as manure by farmer crops, which are grown by using
natural material called organic foods. These are healthier than crops which use chemical fertilizers. Composting is one of the easiest and safest methods of waste disposal. तो इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक वेस्ट किचन का होता है वो गार्डन में डाल देते हैं पिट्स या बिन्स में, और फिर ये कंपोस्ट में टर्न करता है एक न्यूट्रिशन रिच प्लांट के लिए खाना बनता है ये, और इसमें क्रॉप्स ग्रो करी जाती है नेचुरल मैन्योर यूज़ करके, और इससे ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है और ये हेल्दियर होता है. हम जो क्रॉप्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उससे बेहतर यही होता है. तो कंपोस्टिंग एक सबसे ईजी वे है और ईजी और सेफ वे है, मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का. वेस्ट rots easily and mixes with the soil. बट यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, बट दैट इज फॉल्स. सारा वेस्ट थोड़ी करता है. द मेथड ऑफ डंपिंग वेस्ट इन ditches and covering them. Oh, sorry, I understood the question very wrong. I thought that it's true or false, but it's not. But it's your duty, it's your turn that you have to complete this checkpoint. Okay? 3 hours is the topic which we will do in the next one, and we will complete this chapter. Or only one topic is left. So this is the part 1 of this chapter. Only topic 3 hours and waste management is left. Then we have to just do one table, words to know, and then some question and answers. Quick recap, true, false, and all. And this chapter is complete, my students. Wasn't it easy till now? And after that, it's also easy. I promise you, it's very easy. And by learning from me, you know the channel name, टीच एंड लर्न विद मैथ. सो लिटरली आपको पता भी नहीं चला कभी वीडियो ख़त्म हो गई एंड आपको इतना कुछ पता चला. यू हैव टू नाउ, दिस इज़ वन होमवर्क दैट यू हैव टू research more about till we have started. We have started till composting. Checkpoint is your homework. You have to complete this homework. In doubt, just ask in the comment box, and you have to do the revision of this chapter till here. Do the research work more, and if you find any more facts, we will give you a shout out in the next video. Some amazing facts, not like the normal one which we have already studied. Some facts which we have not studied till now about this only, till we have studied composting, till the composting method we have studied is types of waste से लेकर composting तक. If you find any new fact, an amazing one, just write your name, fact, and done in the comment box, and we will give you a shout out in the next video. Thanks for watching. Bye.